Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the internal control part of the Companies Act. तो सेथिरे कोन अछि ना आमे गुडी जिंस देखिलु इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल क्राइटेरिया जहा भी रोल अछि हैला तो एडी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जहा भी हमें देखुछ तो ए जिंसडा रे कोन अछि से खाली हमको तीनटा सेक्शन कहिछि सेक्शन नंबर 134 143 एंड 177 बुझि पाला तो से जिंस जहाँ भी अच्छे हमें सेपरेटली लिखिबा हमको जति की जिंस दरकार एंड द थिंग्स माने जहाँ भी किछि कंसीडर हेनी हमें लिखिबा जिंस रे सेडा हमें कोन करिया अंडरलाइन करिया क्लियर तो बे लेखो फर्स्ट हेडिंग दिया सेक्शन नंबर 134 सेक्शन 134 Section 134 लेखा Section 134 of the Companies Act, Section 134 of the Companies Act 2013 covers the approval and signing of financial statements and the inclusion of a board report in the financial statement बुझिला तो फर्स्ट हेडिंग दिया financial statements approval financial statement approval तो सी कोन कहूची सेक्शन नंबर 134 रे हमको तीनटा जिंस कवर अप होची अप्रूवल एंड साइनिंग तापरे कोन इंक्लूजन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट माने किमिति हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होची के साइन करची आ बोर्ड रिपोर्ट रो कोन हमर नेसेसिटी अछि से तीनटा जा जिंस हमें देखिया सेक्शन नंबर 134 ठीक अछि तो फर्स्ट लेखो द बोर्ड ऑफ directors must approve the financial statements including consolidated financial statements in a duly convened माने duly decided or placed duly convened is a law language for deciding and starting in a duly convened board meeting in a
duly convened board meeting. But एटार सब important point होची MTP 2013 question, very important point एटा से कौन कहूँ देखो the meeting cannot be held through the meeting cannot be held through the meeting cannot be held through video conferencing or any other audio visual means or any other audio visual means. तीनटा जिनस हमको एटी कंफर्म हैला. फर्स्ट थिंग इज हु इज अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूव करछि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करचंदी. कोडी अप्रूव करचंदी इन द बोर्ड मीटिंग रे अप्रूव करचंदी. बट सबडे इंपोर्टेंट पॉइंट होची दे हैव टू डायरेक्टली अप्रूव दस थिंग्स. माने ताके वीडियो कॉल करी की वीडियो कॉन्फ्रेंस करी की कॉल रे अप्रूव करि पारिबेनी. इट्स द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस थिंग. समस्त बुझा पड़ला. बुझनी जदि बुझुची सांगे सांगे कंफर्म करियो हैला. नो टाइम वेस्ट. तो से पॉइंट इंपोर्टेंट डायरेक्टली एतिकी जिंस कहिछि हमर. देन लेख ओके अंडरलाइन कर दियो एडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रो मीनिंग होची जदि आमे आ गुडे कंपनी सहित मर्ज करिछु तो से केस रे दि जन जार मिसेइग्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हबो सेडो आमे कोन कहया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहबा. बुझला. तापर अंडरलाइन करो बोर्ड मीटिंग. जनरल मीटिंग ने बोर्ड मीटिंग रे आ कोन कैंट बी हेल्ड थ्रू VC or audio visual means. Clear? Next point लिखो board report. board report. The board report must be attached to the financial statements it must include the following information. Very important question. कौन है? The state of company's affairs. The state of company's affairs. The state of company's affairs. Number 2, amounts proposed to be carried to reserves. Amounts proposed to be carried to reserves. Dividend recommended.
material changes and commitments, material changes, material changes and commitments, material changes and commitments affecting the company's financial position, affecting the company's financial position, company's financial position, company's financial position, a statement on risk management policy, a statement on risk management policy, statement on risk management policy, a statement on risk management policy, corporate social responsibility initiatives, corporate social responsibility, corporate social responsibility initiatives, corporate social responsibility initiatives, formal annual evaluation of, formal annual evaluation of, formal annual evaluation of board's performance, web address of the annual return, web address of the annual return, web address of the annual return, web address of the annual return. Then होचे हमरा number of board meetings, एटा डायरेक्ट क्वेश्चन तमरो सेति पे एते इंपोर्टेंस देकी लेखौची बोर्ड रिपोर्ट्स रो जहां भी एलिमेंट्स वगैरह अछि से बहुत थोड़े पचारची दोज हैव गॉन थ्रू स्कैनर क्वेश्चन तांको जणा पड़थिबो चैप्टर रो ना अलगा थिबो बट स्टिल ए क्वेश्चन टा बारंबार आछि हमरो तापरे अछि हमरो डायरेक्टर्स रेस्पोंसिबिलिटीज डायरेक्टर्स responsibilities then lekho declaration by independent directors, declaration by independent directors, declaration by independent directors, companies policy on director appointment, director एमती लिखि दियो appointment salary and qualifications तापरे 13 नंबर होची लास्ट ऑडिटर्स कमेंट्स लास्ट ले देखो बुलियो पड़ेला से ऑडिटर्स कमेंट्स लिखि दियो सब।
टेक्स्ट बुक रे बहुत बकवास तरीका रे देछि तमे देखि पारियो सब जिंस मिक्स करिके देछि बुझिला ना तो तारो कंक्लूजन होचे एडा तमरो जदि क्वेश्चन आसिले तुम डायरेक्टली इमती लिखिबो बोर्ड रिपोर्ट रो मीनिंग कोन एंड कंपनीज एक्ट हिसाब रे बोर्ड रिपोर्ट रे जहां भी एलिमेंट्स वगैरह अछि सेडा से पछरिबो तो डायरेक्टली यू कैन राइट आमे लिखिलो डायरेक्टर सॉरी बोर्ड रिपोर्ट रो एलिमेंट्स एबे तारो मीनिंग देखिबा खाली लाइक ब्रीफ मीनिंग डा बुझी पारथिबो तमे या रागिएला सब मो ऊपर रागिले मो कोन करी देखो बोर्ड रिपोर्ट रो एलिमेंट्स कोन फर्स्ट थिंग होची स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स माने कोन कंपनी को जिंस रे एक्चुअली डील करछ कंपनी रे एक्टिविटीज को हिसाब रे होची एंड को पर्पस रे होची दोज आर द कंपनीज अफेयर्स अच्छा मु बुझौची तमे पेंसिल रे कि पेन रे कि जहां भी तुमको जदी इजी लैंग्वेज रे लिखि पारछो संगे संगे पाखर लिखि दियो बुझी पारनो मते पछरे मु लिखि क्लियर amounts proposed to be carried to reserves माने कोन जनरल रिजर्व स्पेशल रिजर्व हैला हमरो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एउडा कोन रिजर्व रे केते अमाउंट हमें रखुछु को पर्पस पे रखुछु केते अमाउंट एक्चुअली हमें रखुछु से अमाउंट डायरेक्टली कहला पर्पस से पचरने अमाउंट केते रखुछो को रिजर्व रे सेडा डिविडेंड रिकमेंडेड केते के डिविडेंड तमे दबाव चाहूछो से वर्ष रो केते के डिविडेंड दबाव चाहूछो मटेरियल चेंजेस देखो एडा इंपोर्टेंट पॉइंट हमरो मटेरियल चेंजेस माने कोन वेरी इंपोर्टेंट चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन रे कोन इंपोर्टेंट चेंजेस जदी आसीची मटेरियल चेंजेस सब चेंजेस नहीं मटेरियल इज अ वेरी की पार्ट हियर तापरे कमिटमेंट्स affecting the company's financial position मनोर से कहिची कोन गुटे पर्टिकुलर डोनेशन किमा गुटे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को से 3 लाख दोछि तो मनोर से कंपनी रा टर्नओवर 10 लाख के 20 लाख के 25 लाख तो सेटा कंपनी रा फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर टिके इंपैक्ट पकियो तारा 10 कोटी जदी टर्नओवर होछ तो 2 लाख रुपीस ताको इंपैक्ट पकेबन तो कोड से रिकॉर्ड करियो कोड से रिकॉर्ड करियोनी वेरी गुड जोटा इफेक्ट पकेबो जार टर्नओवर होची 10 to 20 lakhs से डायरेक्टली कोन करियो रिपोर्ट करिवो जस्ट बिकॉज़ इट हैज एन इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन माने तार गुटे इमिति कमिटमेंट जोटा कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी ऊपर इंपैक्ट पकोछ अ स्टेटमेंट ऑन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी सब कंपनी को रिस्क रहइबो आमे हमरो तरफ रो कोन करछु जेंदी कि रिस्क रा टिके मिनिमाइज हेई पारे रिस्क अवॉइड हेई पारियनी रिस्क किमती मैनेज करछु ता ऊपर स्टेटमेंट तापरे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ए विषय तमे पढ़थिबो आगुडू तार ब्रीफ मीनिंग होची माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ भी अच्छी सेडा प्रिस्क्राइब करची गुटे टर्नओवर रो अधिक कंपनीज को से कहिची कोन तमे कंपलसरीली 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट को कोन डोनेशन किंबा सोसाइटी पई यूज करियार अछि एतिकी बुझिथो 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट सोसाइटी पई यूज करियार अछि तारे बहुत किछि जिंस अछि हंगर रिडक्शन अछि पॉवर्टी रिडक्शन अछि कि एनवायरनमेंट पे तमे डोनेट करि पारियो कि प्लांट्स तमे ये कर पारियो सस्टेनेबिलिटी पे काम करि पारियो तो तम इच्छा सेडा तो तमे को इनिशिएटिव चूज करलो सेडा एडी मेंशन करियर अछि बुझिला समस्त ए पॉइंटटा बुझिला क्लियर तापरे फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब जिंस जे अप्रूव करछन बट बोर्ड जे भी अछि से भल से काम करछ ना नै के अप्रूव करियो निजे निजे आडो टिके इवैल्यूएशन करिया दरकार ना नै तो से कोन करियो फॉर्मेलिटी पे गोटे एनुअल इवैल्यूएशन करियो कि एति एति काम हेतिला हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेति कि इंप्रूव हेलु कि कोन हेल बुझिला तापरे वेब एड्रेस ऑफ द एनुअल रिटर्न माने तारा लिंक एनुअल रिटर्न जहां भी हम पब्लिश करथिबो तारा लिंक नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स केतरा बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड हेची ईयर रे डायरेक्टर्स रेस्पोंसिबिलिटीज को डायरेक्टर केति की रेस्पोंसिबिलिटी तापर डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोन कोन डिक्लेयर करले कि तांके कोन डिक्लेयर करिए कि मते का से तो किछि लिंक नै कंपनी रे को अफेयर से तो मते किछि लिंक नै मु को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चिन्नी नै मु होची गुटे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से जहां भी डिक्लेरेशन देछि सेडा भी सेडी अटैच हबो कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट सैलरी क्वालिफिकेशन तो तांके कोन प्रिस्क्राइब करी रखि चंदी गुटे डायरेक्टर अपॉइंट करला को सेडा मेंशन करि अछि आ लास्ट हो जे हमरा ऑडिटर्स कमेंट्स जे भी ऑडिटर्स आसीची से कोन कहिछि कंपनी विषय
से कौन गई कंपनी विषय कौन गई कहले कंपनी भल परफॉर्म करची ना किसी फ्रॉडुलेंट मैनर रे कौन काम करची सब जिनस जा कौन ऑल्टर कमेंट गुडा हमको मेंशन करिया पड़े 13 पॉइंट्स रे इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज से मेंशन करो देखो बहुत कम कम पढ़ुछ सांगे सांगे ही पारियो किछि डाउट अछि कहि पारियो टिके देखि दियो 1 मिनिट ओके थैंक यू बाकी जण कंफर्म करो डाउट नहीं कार किछि क्लियर ठीक अछि प्लीज राइट डाउन आर पेनल्टी माने सेक्शन 134 रो पेनल्टी एडा if a company contravenes if a अच्छा लॉ लैंग्वेज पे बुझुछ ना कष्ट लाउची बुझुची contravenes माने क्रॉस करियार if a company contravenes the provisions if a company contravenes the provisions of this section contravenes the provisions of this section the company shall be punishable the company shall be punishable here the company shall be punishable with a fine greater than 50,000 but which may extend to extend to 25 lakhs which may extend to 25 lakhs मन रहा सिंपल कौन मामा आरटीपी क्वेश्चन गोटे थिला लेख टिके ता तळे लिखि दियो मो एग्जाम टाइम रे मध्ये मो एती पढ नथिले जेतळे एबे जेति की पढुची ना एमटीपी आरटीपी वर्कबुक मो एग्जाम टाइम रे मो पढ नथिले तम माने पढियोनी आ मो तो पढी कहूची अरे देखो मो सेति पई कहूची नोट ता बहुत वैल्यूएबल तुमको एमटीपी आरटीपी वर्कबुक सब जे तुम डाउनलोड करके आन दबो बट चैप्टर वाइज क्लासिफाई किए करियो हाँ मु तो करी वेरी स्पॉन्टेनियस आंसर्स बट चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन पे हमको कौन दरकार कीन अंडरस्टैंडिंग थिले जे तमे कहि परियो ना बही दे देले मध्य के लिखि दोगी को चैप्टर रो एडा जानिया दरकार तो बुझला ना तुम बही सिना दे देलो को चैप्टर टा कोडा कोन जानि परियोनी बुझला ना तो लेखो क्वेश्चन कौन थिला सेक्शन 134 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 134 माने ए सेक्शन डा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गेस कर परियो को कंपनी ना ना नॉट एप्लीकेबल ऑन टिके आराम से भाबो कहि दे परियो नॉट एप्लीकेबल ऑन कौन ना 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 पब्लिक नहीं भाबो टिके नो टिके पाखो पळाइलो स्टैट्यूटरी तो नहीं कोडा ना registered कौन कंपनी सब कंपनी तो registered ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो आंसर वेरी गुड गवर्नमेंट कंपनी कौन पे नहीं देखो वेरी गुड प्रकाश वेरी गुड गवर्नमेंट कंपनी तो कौन पे गवर्नमेंट कंपनी द लॉजिक इज ए मामा टिके सुन लॉजिक इज गवर्नमेंट को हमें रिपोर्ट करिया तो गवर्नमेंट को जदि रिपोर्ट करिया गवर्नमेंट कंपनी का रिपोर्ट करिया ताकू निजे से रिपोर्ट करियोगी नहीं तो प्योरली लॉजिक एडा हम किछि मन रखिया जिंस नै स्नेहा पाखो पाखो पळा आसला स्टैट्यूटरी कंपनी हैला स्टैट्यूटरी कंपनी इज समवॉट लाइक गवर्नमेंट कंपनी बट डिफरेंस कोन एडा रे ना स्टैट्यूटरी कंपनी इज गवर्नड बाय अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट or special legislature but government company is controlled by the government the entire thing is
keenly observed by the government of India. बुझला? Section 134 is not applicable on government company. बुझला? एटा होची हमर कोन MTP question. तो एटा के इवैल्यूएट करछि गवर्नमेंट कंपनी रो ना लेख evaluated by ministry or department of central government, particular ministry thibo ministry or department of central government. आ गुटे पॉइंट रही जाइए लेख देख पूरा से गोली घाटी की थिबा जिनस रे खाली रेलेवेंट जिनस आमे लेखुछ हैला तो एडारु जो पॉइंट बुझा पड़लानी वी कैन एलाबोरेट मु कोन कहया चाहूची एली कहले जदी सब जिनस जा मु पढीबी ताइरु किछि न बुझिले मु बुझेबी माने नै बट इंपोर्टेंट जिनस जे तुम कम करिके कहि दोछि त हम एडारु पढिबा टाइम टा कम होछि तो से टाइम टा हमें दे परिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो तमे जहां भी अच्छी बेझिझक पचारि परियो साइनिंग डेट the signing date should be after the date of board meeting after the date of board meeting in which financial statements were approved तो केबे अच्छा आज अप्रूव कले जाएगी काली से साइन करियो ना आगे दिन साइन करी तापर अप्रूव करियो कि से कहे कोन पे पचारछ डिसाइड तो हेई जेइछ पचारछ कोन पे रागी जियो नी किछि डाउट अछि कार डाउट अछि स्नेहा बुझिला ऑनलाइन स्टूडेंट समस्त बुझिला अच्छा बुझिला नी ना बुझिला कोच अच्छा ओके ओके थैंक यू तो हेडिंग दियो सेक्शन 143 सेक्शन 143 duties and powers of the auditors section 143 कोन duties and powers of the auditors duties and powers of auditors duties and powers of auditors एथरे जेतिकी जिनस अछि हमकु चारटा जिनस बेसिकली बहुत इंपोर्टेंट सबडू हैला हमें चारटा क्लासिफिकेशन करिबा देन हमें टेक्स्ट बुक रे अंडरलाइन करिबा आई रिक्वेस्ट यू ऑल की तमे जहां भी टेक्स्ट बुक रे अंडरलाइन करछ सेटा सिंपल वर्ड से गोटे पेज रे लेखि की तमे सेडी आगे अटेस्ट कर दियो ताकि तुमको टेक्स्ट बुक खुलिबा को पड़िबनी
बुझी पालो बिकॉज सेडी जहाँ भी अच्छे सेडा मु पूरा पूरी रेलेवेंट कहि पारिनी बट स्टिल रेलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिके तो दरकार बट जहाँ भी मु लेखौची सेडा पक्का तो माने लेखियार अछि लिखले सेडा लेखिबो बट अगेन से पॉइंट गुडा कवर करिकी से पाखरे लिखि दबो तो फर्स्ट चारटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखो सजेस्टेड रो माने देखो जिनस होची ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर जहाँ भी अछि सेडा अनलिमिटेड गोटे कंपनी रे जहाँ भी अच्छे सेटा आउडे कंपनी सहित मैच करियो कहि हमें कहि परियानी इट्स डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी बट स्पेसिफिकली जनरल जहाँ भी अच्छे सेटा हमें फर्स्ट लिखिबा तो फर्स्ट पॉइंट लिखो एक्सेस टू कंपनीज रिकॉर्ड्स एक्सेस टू कंपनीज रिकॉर्ड्स एक्सेस टू कंपनी रिकॉर्ड्स तो मु एडा को सब क्लासिफाई कर दोची तुमको कीवर्ड्स गुडा को बुझा पड़िया पाए सीरियसली सापो सापो होची घर बनोची ना कोन रे इट्टा बकोच लेखा राइट टू access कौन सी एक्सेस करि पारियो कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट्स कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट्स कंपनीज बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स जीवन रे आगु को बढ़िया दरकार से कहछि एडा पढ़ले तुम ऊपर पड़े सेंस कोन रैंक ऊपर पड़ो वाउचर्स records of subsidiaries and associates records of subsidiaries and associates and consolidated financial statements consolidated financial statements consolidated financial statements एटा चारटा होची कीवर्ड्स देखो बुक ऑफ अकाउंट्स देखि पारियो वाउचर्स देखि पारियो रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स सब्सिडरीज माने कोन केते परसेंट कंट्रोल सब्सिडरीज माने केते 75 ना 50 केते मुझे ती कही आ कंपनी सेक्ट कौन कहियो मैं क्या जॉब छोड़ दो 50 अच्छा हे थियो कोन आ मु मध्ये जानछ ना कोन एसोसिएट माने केते हो छाड़ सब्सिडरी छाड़ एसोसिएट माने केते एसोसिएट केते परसेंटेज कहथिले देखिको एसोसिएट इज greater than 20% सब्सिडरी कहयोनी माड खायो पक्का 50 आ 75 कहथिला आ ताबरे कहले तमे जति कहले सेति की माले मो भोजी ना कोन मु जति देले सेति हैला तो चारटा जे जिंस देखिबो कंपनी रो बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स माने कोन बिल्स जहां भी अछि आमे जति किनछु सेडारो वाउचर्स records of the subsidiaries and associates तमरो subsidiary और associate company रो book of accounts and consolidated financial statement तार मीनिंग कहिथिली कोन कहिथिली आपण कहउचंदी आ थरा हम पचार चंदी आपण कहले कोन हम कहले कोन इन द डायलॉग जा कोनी मत consolidated financial statements माने कंपनी सुनो भल से कंपनी जैसे तो मर्ज हेची आउडे कंपनी सहित ता सहित मिसिकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनेबो बुझिला नेक्स्ट हेडिंग दियो ऑडिटर्स रिपोर्ट नंबर 2 ऑडिटर्स
report. Auditors report. Auditors report रे कौन कौन रहियो तीनटा जा जिंस रहियो एडा भी तमरा डायरेक्ट क्वेश्चन. What do you mean by auditor report? Explain its elements. It comes for 4 to 7 marks depending upon the question. First देखो statement that auditor has obtained all necessary information and explanations तो से कौन डिक्लेरेशन दबो कि जहाँ भी सी ऑब्टेन करछि जहाँ भी ताको दरकार नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अछि सब किछि सी ऑब्टेन करि देछि कहि कि कोन दबो सी स्टेटमेंट ता दबो. नेक्स्ट लेखो statement that auditor's opinion is that the company has kept proper book of accounts a statement that auditor's opinion is auditor कौन opinion करियो जे मोबाइल जा टिके साइलेंट करो auditor's opinion is that कोई दे लोन उठी पक्की दो बैलेंस चले is that the financial statements मोर एफ टा देखो जानती कि लेले है जीज financial statements comply with accounting standards अरे बाप रे comply with accounting standards. ऑडिटर रिपोर्ट रे कौन कौन रहियो बुझला ए कौन कौन रहियो बुझला तीनटा पॉइंट मते गुटे गुटे लाइन रे के कहि परियो गुटे गुटे लाइन रे कर अछि. फर्स्ट पॉइंट कोन को सेकंड पॉइंट वेरी गुड तापरे थर्ड थिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सहित रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई करछ बुझे पड़ला तो एडा वेरी इंपोर्टेंट मार्क करथिबो. एडा इंडिविजुअली गुटे क्वेश्चन हे परियो दैट्स व्हाई मो अलगरे इलैबोरेट करले. नंबर 3 अच्छा ऑनलाइन समस्त बुझा पड़ला हेडिंग दियो फ्रॉड रिपोर्टिंग थर्ड नंबर पॉइंट फ्रॉड रिपोर्टिंग ओके
fraud reporting मु एक्जाक्टली जिंदी प्रेजेंट करछि सेमती जदी प्रेजेंट करियो फुल मार्क्स मिलेबो एग्जाम रे पक्का auditors are required to report auditors are required to report auditors are required to report स्नेहा चार्जर कनेक्ट कर auditors are required to report thank you auditors are required to report any offenses any offenses of any offenses of fraud however the companies act however the companies act however the companies act has separate provisions for penalties as well तो से कौन कहूची ऑडिटर जे भी अच्छी ही इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑफेंसेस ऑफ फ्रॉड ताको जहां भी फ्रॉड दुसिला तार ऑफेंसेस कौन हबो से रिपोर्ट करियो सी रिपोर्ट करियो ता पर भी कोन कंपनीज एक्ट रो अलग अलग पेनल्टी थाउची अलग अलग हमरो ऑफेंसेस को इज इट क्लियर और नॉट लास्ट पॉइंट लिखो सप्लीमेंटरी ऑडिट supplementary audit एटा देखो सप्लीमेंटरी ऑडिट रो केस केतोडा आसीबो जदी गवर्नमेंट जे भी अछि किबा ऑडिटर जे भी अछि सी फील करछि कि आमे जो ऑडिट करछु आडू अधिक ऑडिट माने सिवियर ऑडिट ए कंपनी डिजर्व करछि माने सी तो जानि पारला किछि फ्रॉड होउछि बट से जानि पानी रीजन कोन से माने जोर जबरदस्ती रे ताकू सब जा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनांदी जदी बा प्रोवाइड करचंदी ताकू लागुछि कि देयर इज स्टिल इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीइंग हिडन फ्रॉम मी बुझिला तो से कौन करियो एडी आनिबो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल माने ऑडिट रो पूरा हेड डिपार्टमेंट होचे हमरो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जे कि आसीगी हमरो 60 दिन भीतर से कौन करिवो पूरा पूरी अगेन ऑडिट करियो सो दिस इज अ सप्लीमेंटरी ऑडिट व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंटरी मींस समथिंग इन एडिशनल ठीक अछि समथिंग इन एडिशनल तो एन ऑडिट कंडक्टर ऑफ एन ऑडिट इज नोन एज सप्लीमेंटरी ऑडिट तो लिखो द कंट्रोलर the spelling is COMPTROLLER बुझिला ना PT the controller it's not controller it's controller and auditor general the controller and auditor general CAG can conduct a supplementary audit can conduct a supplementary audit of companies financial statements within 60 days of receiving the audit report within 60 days of receiving the audit report within 60 days of receiving the audit report बुझला एडा होची तार फर्स्ट पॉइंट जेतलो ऑडिट रिपोर्ट ता गवर्नमेंट को दिया होची दियाले जेतलो गवर्नमेंट को लागिला कि देयर इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच आई नीड टू इंक्वायर तो से कौन करियो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पठेबो 60 डेज ऑफ माने कोन प्रेजेंटिंग द ऑडिटर रिपोर्ट देन सेकंड पॉइंट होची द सीएजी कैन आल्सो माने जे भी इंटरफियर हला से कौन करि परियो द सीएजी कैन आल्सो request for additional information
can also request for additional information तापरे कौन करियो comment on the audit report 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 तापरे कौन करियो authorize people to conduct audit से पुणी का गोले गोटे recommend करि पारियो गोटे special team को authorize people to conduct the audit authorize people to conduct the audit बुझी पालो authorize people to conduct the audit कार किछि डाउट अछि एथरे मन नै सिंपल पॉइंट स्टिल काउ जदी डाउट अछि प्लीज कंफर्म ओके थैंक यू लेखिलो सब सरीला एबे गोटे टेक्स्ट बुक को आस पेज नंबर 446 पेज नंबर 446 एथरे सेकंड पैराग्राफ टा देखो जो जिनस अंडरलाइन करे भी पर टिके लिखि देबो पाखरे हैला तो से कोन कहू देखो it says that the financial statement including CFS shall be approved by the board of directors and signed on behalf of the board के साइन करियो बोर्ड रो बिहाफ रे करिवो chairperson of the company where he is authorized by the board or by 2 directors out of which one shall be managing director and if any and the chief executive officer and the chief financial officer and the company secretary of the company wherever they are appointed or in case of OPC only by one director for submission to the auditor for report thereon. So important mark करो एटा जिनसडा लिखि पारियो ना लिखे भी चार्ट करिके हां लिखिबो तो से कौन कहूची को केस रे को लोक सेटा साइन करिवो खाली सेति की कहला देन कंटेंट्स गुडा को ऑलरेडी हम डिस्कस कर देचु ड्यूटीज को आसो से लिखि देखो इट्स नॉट एग्जॉस्टिव माने सब जिंस जागो से कवर करिनी खाली मेन जिंस जा कहिछ तो खाली अंडरलाइन करो राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू द बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर्स हमें लिखिलो ऑलरेडी हैला बुक ऑफ अकाउंट्स वाउचर से जिंस जागो किमिति से एक्सेस करिवो ता पाखरे राइट थिबो सब बळे तापर से कहछि इंक्वायर इनटू लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी बुझिला लोन्स एंड एडवांसेस नै छि जहां भी सेडा देखिबो तापर टर्म्स जहां भी अछि प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट माने जहां भी से जदी आन दै छि से कहिछि कोन जदी मु देई पारलिनी कि मरियली कि कोन भी हैला त मेंबर्स मानगरो नै जो मेंबर्स को बाडे कि नै जो मेंबर्स रो घर रो नै जो इन द कथा जदी से कहिछि तो सेडा कोन हैला हमरो प्रीजुडिशियल माने अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड द कंपनी तो सिमति जिंस कोन करछि कि सेडा से देखिबो देन transactions of the company which are represented merely by book interest are prejudicial to interest of the company transaction जहाँ भी सेडा कोन ठीक ठाक भाबरे हेछि कि से जहाँ भी मेंशन करछि then but the company not being an investment or a banking company से कोन कहिछि consist of share debenture securities have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company जदि से unauthorized manner रे किछि ये कर देछि कि तो तापरे कहिछि लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट्स से ठीक ठाक भाबरे मेंशन करछि ना नै किबा माने गुटे ना देगी आउडे जिंसो कर देछि ना कोन तापरे से पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट
ता निजर एक्सपेंसेस भी से कोन कंपनी रो ये को पकई दै छी कि तापरे इट्स स्टेटेड इन बुक एंड डॉक्यूमेंट्स द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर कैश whether cash has actually been received in respect of such allotment ना खालडारे से कहि दोछ मिसलीडिंग कर दोछ बुझिला ना सब जिंस जा से देखि पारियो एडा भी हमें देखिलु कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरी एडा सेडा सब जिंस जा से देखियो तापर से कोची रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम कोन करियो मेक अ रिपोर्ट तो एडा कोन हमरो ऑडिटर्स रिपोर्ट तो ऑडिटर्स रिपोर्ट हमें देखिलु ऑडिटर रिपोर्टर से कोन मेंशन करिवो से एडी कहिछि एतिके सब जिंस दरकार नै की इंपोर्टेंट पॉइंट खाली दरकार से कहियो जहां भी देछि सेडा ठीक ठाक भाबरे अछि ना नै ओपिनियन से कोन जहां भी रखिछि सेडा लॉफुल अछि ना नै तापर से कोन करियो ब्रांच ऑफिसर से देछि एली कहि लिखियो लाइक ब्रांच ऑफिसर इंफॉर्मेशन मो पाखरे अछि कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सहित कंप्लाई करूछि कहिगिरी रिपीटेटिव जिंस हमें ऑलरेडी देखि सारछि तो देखिबो तापर से कोन नेगेटिव कि जहां भी प्रॉब्लम उडाग मेंशन करिछि ना नै सेडा मध्ये से देई पारिबो कि प्रॉब्लम भी मेंशन करि पारियो डायरेक्टली तापरे देखो गवर्नमेंट कंपनी केस रे कोन हबो से कहिछि गवर्नमेंट कंपनी केस रे कोन हबो ए उडाग हेई पारिबो अच्छा एडी सप्लीमेंटरी ऑडिट केस रे लेखो सप्लीमेंटरी ऑडिट केस रे गवर्नमेंट कंपनी रो सबोळे सप्लीमेंटरी ऑडिट आग हबो काहेकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करिवो गवर्नमेंट कंपनी रो हे पारियो बट अदर कंपनीज रो भी हे पारियो इफ गवर्नमेंट हैज reasons to believe मो कोन कहली बुझी पालो ना गवर्नमेंट कंपनी रो सबोळे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करियो रे आ बाकी कंपनी रो जदी ताकू लागुची कि किछि फ्रॉड इन्वॉल्व हेगी अछि तो गवर्नमेंट ता इंटरफियर करि परिबो बुझी पालो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर ओके आमे देखिलु जहां भी 60 डेज विदिन रे से कोन कोन करिवो से जिंस आमे लिखिलु ऑलरेडी ए पॉइंट टिके देखो इंपोर्टेंट नै जहां भी आमे देखिनु एबे जे तो से कहउची कंपनी को जतलो गुडे ब्रांच ऑफिस थिबो कंपनीज रे ब्रांच ऑफिस थाउची द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस शैल बी ऑडिटेड either by the auditor appointed by the company or other person qualified for appointment as an auditor of the company under this act and appointed under section 139 जहां भी हला तो के कोइ परियो से कंपनी रो ऑडिटर करि परियो किंबा आ गोटे ऑडिटर से ब्रांच ऑफिस पे भी अपॉइंट हे परिबो इन दिन आइ कि ए कंपनी रो करचेले ब्रांच ऑफिस रो करि परियनी एम्ति किछि रूल नै ए कंपनी रो ऑडिटर आउडे ब्रांच ऑफिस रो भी करि परियो तो मे बी गोटे केस लो क्वेश्चन हे परिबो तापर से कहउची हेले आम कंपनी ब्रांच ऑफिस को जणे आगे करि परियो इन कोन रूल अछि कि नै माने हमर ऑडिटर भी करि परियो नले ब्रांच ऑफिस पे अलग ऑडिटर भी अपॉइंट हे परियो तापर से कोन कहछ देखो ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉरेन रे अछि सेतलो कोन करिया द अकाउंट्स द ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड ईदर बाय द कंपनीज ऑडिटर कंपनी रो जे भी ऑडिटर अछि सेडी किंबा अकाउंटेंट और बाय अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड माने मो जदी गोटे अकाउंटेंट हिसाब रे काम करथिल अकाउंटेंट हिसाब रे काम करथिल मोर सीएमए क्लियर हैला पोरे मो ऑडिटर ही परि ना नै सेडरो ऑडिटर क्वालिफिकेशन मो क्वालिफिकेशन मैच होछ ना नै तो मो अकाउंटेंट हेले मध्य ऑडिटर हेबा पे क्वालिफाइड ना नै तो से सेडा कोच तो जदी आउटसाइड इंडिया अछि तो सेडी रो जदी गोटे अकाउंटेंट जे कि क्वालिफिकेशन आमोळिया रखिछि तो सीए भी ऑडिट करि पारि बुझि पाला तो एति के सब हेछि हाँ एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स तार जहाँ भी स्टैंडर्ड्स अच्छे से फॉलो करिवो ए पॉइंट टिके इंपोर्टेंट मार्क करो 10th नंबर पॉइंट the central government may after consultation with the national advisory committee on accounting and auditing standards national advisory committee on accounting and auditing standards by notification lay down auditing standards तो एटा के फ्रेम करची National Advisory Committee on Accounting and Auditing Standards मन रखिबो एडा बिट क्वेश्चंस रे आसीबो NACAA
नाका ना सी कौन कौन करिपारियो तार जहाँ भी ये जिनस जाक देछि इरेलेवेंट हमर एग्जाम पर्सपेक्टिव रे एते इंपोर्टेंट नै काटि दे पारियो केबे पचारनी मध्य एडा होछि हमर पेनल्टी प्रोविजन डा हैला जदी गुटे कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए और सीएस इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई प्रोविजन सहित कंप्लाई करनी तो कौन हम इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी पेनल्टी होछि 5 लाख रुपीस अदर कंपनी पेनल्टी होछि 1 लाख रुपीस बुझला एडा इंपोर्टेंट मार्कर बिकॉज ऑडिटर रो पेनल्टी ना हमें पढ़िनु बुझला ना किछि डाउट अछि कार एमटीपी आरटीपी रो तो एडार क्वेश्चन किछि नै हमरो डायरेक्टली से पचारले ड्यूटीज पचारिबो ड्यूटीज पचारले यू हैव टू राइट दोस थिंग ऑडिट रिपोर्ट रो गुटे क्वेश्चन आसुची देयर इज अ चांस दैट वी कैन गेट ऑडिट रिपोर्ट क्वेश्चन बिकॉज अल्टीमेटली हम पर्पस होची ऑडिट करियर सो देयर विल बी अ क्वेश्चन देयर किछि डाउट अछि कार देखि कहि परियो टेक्स्ट बुक रो वी आर नॉट स्किपिंग थिंग्स सेते में देखि टिके को नेक्स्ट पेज देखो 450 450 रे से देखो सब जगह मु जहा कहिछि सेडा लेखिछि सेडी किछि डाउट अछि लेखो नले वी आर स्टार्टिंग विथ 177 ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुहाना किछि डाउट नहीं सुहाना मेघना तृप्ति वर्षा स्नेहो and all online students clear thank you बाकी जण प्लीज रेस्पोंड सब जिन जो इजी करी लेखे देली ता माने नै कि टेक्स्ट बुक टा इग्नोर करियो ना जार जोड़ेले डाउट रही पारियो ना डाउट नाइ कहले दिडा जिंस होई पारियो इधर पूरा सब जिंस बुझी होची नले सुनियार इंटरेस्ट है नै कोडाली भाबी मु नन ऑफ द अबव मझुडा कोन हां तापरे तुम काढियो फाइन छाड़ सो मु सेक्शन 177 को प्रोसीड करची लेखो लास्ट टॉपिक तीनटा सेक्शन हमें सॉरी देलु देखो आज सेक्शन 177 एरे एरे रेड पेन रे लिखिर थिला पर रंग बिरंग कहिया तमरा रंग बेसी देखुच लैपटॉप रो रंग बेसी आई हेट दिस लैपटॉप I hate you but देखो hate करले मध्य I have to wait से देखिलो आमे वेट करले सिया आसियो मने आपे ए कोन चलची कोनडा सेडा हां एरे लाग्यो पेंडा कोन सेडा आईफिल टावर बनोच खाउच सेडा काली उपस थिला आज खाइ दोच सेक्शन 177 हेडिंग दियो सेक्शन 177 मु तमन को कहिची मु तमन कहिची मु बहुत कष्ट रे गोटे टीचर हिची मते हसेबनी नै कंदेयनी मध्य हला कोन सेडा गोटे बई काडी तू बाहु बळे कोन होचु लास्ट तो चैप्टर सरजे हमरो एते बड़ चैप्टर सरजे भाबो केती परिश्रम कले जे एती होच केते कष्ट रे टीचर हेच तमने जे आईफिल टावर बनोज बई रे अमु केबे आईफिल टावर बनेनी मो हाइट को मध्य सेटा सूट करियोने बुझिला लेख ऑडिट कमिटी हेडिंग दियो कोन सूट करियो रेड फोर्ट सूट करियो नाइस ताजमहल सूट करियो मो मुहो ताजमहल सूट करियो नाइस नाइस थैंक यू सो मच
तमे कौन कहले मध्य मो 177 टा सरे गया छाड़ी टिके आगा अच्छी गोटे पैराग्राफ थैंक यू सेक्शन नंबर 177 रे कौन कहला सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट आम पई के ताजमहल बने लालिया हेले हे परथांदा बट वी विल बी सेटिंग अ ट्रेंड हैला आमे जदी सीएमए क्रैक कर दोछ त आमे इंस्टीट्यूट को गोटे कोन बनै देबा बस ताजमहल बनै देबा हैला आ सेतलो आम पई भी गोटे प्रोविजन डी आसियो आ पिला ने पढिए प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं डाउटफुल डेट नस नस में Section 177 of the Companies Act 2013 covers the कौन कौन कवर करिवो इंस्टीट्यूट रो पोको चोरले इमती क्वेश्चंस पचार दबो कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट अछि सेडा ए सेक्शन रे कवर होउछ ना नाही 2 मार्क्स पळेबो जे बुझी पारछ ना तो वी कांट रिस्क 1 मार्क आल्सो लॉ रे मु जिंदी कहछि सिंदी पढिबो एग्जामिनेशन पक्का आसीबो आई कैन एश्योर यू बुझिला काई गेले मु पढि की कहउछि ना मु सब जिनस पढ़ी तुम कही दउछि तुम पढ़ियो मध्य मु कहूनी जति लिखिछि खाली टिके पढ़ियो कौन कौन कवर करछि देखो कंपोजिशन रोल्स एंड responsibilities composition roles and responsibilities of karo audit committee in a listed company audit committee in a listed company हेडिंग दियो कंपोजिशन सिंपल मैनर रे लिखि देबे मो गोटे लाइन रे कंपोजिशन माने ऑडिट कमिटी भितर के रहूची ऑडिट कमिटी भितर के रहूची तमे रहूछ ना मो रहूछ ना के रहूची ऑडिटर रहियो वेरी गुड इन द क्वेश्चन जे तू दबो इंटरव्यू रे आंसर दबो इन दी से कहियो वेरी स्पॉन्टेनियस प्रेजेंस ऑफ माइंड अछि पिलाडर ऑडिट कमिटी मस्ट हैव एट फर्स्ट पॉइंट ऑडिट कमिटी must have at least 3 directors audit committee must have at least 3 directors माने कोन मिनिमम 3 directors मैक्सिमम से किछि कहनी 3 directors बुझि पालो the majority should be independent directors simple अच्छी words ठीक अच्छे ना last point एथरे composition रे the majority of the committee members including chairperson must be able to read plus understand financial statements आउ उल्ला जो सब धरी की पढ़ा आस्थियो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहिरी हबो की नहीं they must be able to read and understand financial statements बुझी पालो
नेक्स्ट हेडिंग दियो अप्लीकेबिलिटी। हिला बस टिके, हैव पेशेंस। अप्लीकेबिलिटी कागो अप्लाई होची, applicable to listed companies, applicable to listed companies and public companies, applicable to listed companies and public companies meeting certain criteria, meeting certain criteria, meeting certain criteria, including meeting certain criteria, including paid up share capital greater than is equal to 100 crores, aggregate outstanding loans, shortcut रे लिखुची, aggregate outstanding loans plus borrowings plus debentures plus deposits, aggregate outstanding loans, borrowings, debentures, deposits must be greater than is equal to 200 crores. तापरे एडी नेक्स्ट पॉइंट एमते लेख 2 पॉइंट्स अगा अछि आ लेख द ऑडिट कमिटी must act in accordance with the written terms specified by board का कथा सुनिबो, बोर्ड कथा सुनिबो। लास्ट पॉइंट, ऑडिट कमिटी has the power to investigate any matter, review and monitor auditors independence and performance, review and monitor auditors independence and performance, examine financial statements and auditors report
recommend for appointment, recommend for appointment, remuneration, recommend for appointment, remuneration and terms of appointment, of auditors, last point lekho एडार point रो last एडा final the audit committee अरे तापरे तम से पढ़ियो ना सब फिल्टर आउट करके लिखि देला कोन पढ़ियो कि the audit committee may call for comments of the auditors about internal control system and statutory auditors. And statutory auditors. क्लियर बुझिला किछि डाउट अछि कार एथरे ऑडिट कमिटी जहां भी अछि तार जहां भी मेन पॉइंट्स अछि सेडा मैं काली अंडरलाइन करिया बट वर्तमान कार किछि डाउट अछि की ओके थैंक यू